A very good morning students. How are you? I hope बेटा आप सभी घर पर सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. And I also hope that you are enjoying your GK lessons in the videos. Students, up till now we have done Unit 1 in which we have 4 lessons, lesson 1, 2, 3 and 4. And we have done 10 current affairs also. Now today we start our second unit, which is sports roundup. And in this lesson 5 of this unit, sports roundup, you are going to know your sports. What is the name of the lesson? Know your sports. And in this lesson, students, you have to identify and write the names of the sports which are shown in the picture or which are given in the question. So let's move to first question. In this sport, the participants jump off a 3-meter springboard or a 10-meter platform at the Olympic Games. इस स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, या तो वो 3 मीटर हाइट पे एक स्प्रिंग बोर्ड लगा होता है या तो वहां से जंप करते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, और अ 10 मीटर प्लेटफॉर्म एट द ओलंपिक गेम्स, या फिर वो 10 मीटर की हाइट पे जो प्लेटफॉर्म बना रहता है वहां से वो जंप करते हैं. ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर इज डाइविंग. डाइविंग, व्हाट इज डाइविंग? अब देखते हैं स्पोर्ट्स के बारे में. इट इज द स्पोर्ट ऑफ जंपिंग और फॉलिंग इनटू वाटर फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म और स्प्रिंग बोर्ड एंड यूजुअली वाइल परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक्स. स्टूडेंट्स, ये जो स्पोर्ट है इसमें क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म से या फिर स्प्रिंग बोर्ड से जंप किया जाता है एंड देन they fall into the water. The participant, he or she falls into the water. As you can see in the video also students, that आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर जो अभी पार्टिसिपेंट्स खड़े हैं, दे जस्ट जंप और दे कैन ऑल्सो स्टैंड ऑन द springboard, so they jump and dive into the water. The name of the game is diving. And diving, students, if you see, it is an internationally recognized sport, or it is also a part of Olympic Games. Olympic Games, very renowned games. Okay, now we move to next question. Question 2. A game in which 2 or 4 players use rackets to hit a small hollow rubber ball against the walls of an indoor court. Students, it is like a room, you can say, like आपने बैडमिंटन कोर्ट का है, so it is like that court जिसमें which is surrounded by the walls actually. अगर आप बैडमिंटन कोर्ट देखेंगे वैसे तो वो बीच में एक नेट होता है, अदरवाइज इट इज ओपन, इंडोर होता है बट ओपन एरिया रहता है वहां पर, बट इट इज एन इंडोर कोर्ट. ओके, सराउंडेड बाय द वॉल्स. सो इस गेम में फ्रेंड्स 2 या 4 प्लेयर्स होते हैं जो अपने रैकेट से एक बॉल को, हॉलो रबर बॉल को हिट करते हैं अगेंस्ट द वॉल्स, और द नेम ऑफ द गेम इज स्क्वैश. As you can see in the video also, students, 2 players, they are playing, okay, in the picture and as well as in the video, the 2 players are playing. They have badminton, and how they play, friends, the objective of the game is to hit the ball in such a way, आप जो opponents हैं उनको जो बॉल है वो ना खेल पाए, इस तरह से जो है जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को हिट करते हैं. सो देयर आर अबाउट 20 मिलियन पीपल who play squash regularly worldwide and in more than 185 countries. Friends, 185 countries में रोजाना 20 मिलियन लोग ये गेम खेलते हैं. It is very famous game. Okay, so now just we move to next question. Yes, now we move to question number 3. Greco-Roman and freestyle are 2 popular form of this sport. So it's Greco-Roman और freestyle इस sport की 2 popular forms हैं. Okay, and the correct answer is wrestling. As you can see in the picture also, that the 2 players, okay, they are playing which game? Wrestling. And in the video also, student, you can see the famous Indian wrestler, that is सुशील कुमार. सुशील कुमार जो इंडियन फेमस रेसलर हैं हमारे, एंड ही इज प्लेइंग दिस रेसलिंग गेम विद हिज ओपोनेंट. And wrestling, actually, friends, wrestling is a combat sport
जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व रहती हैं, सच एज क्लिंच फाइटिंग, थ्रोज मतलब एक दूसरे को फेंक देते हैं, टेक डाउन्स, देन जॉइंट लॉक कर देते हैं, पिंस एक्सेट्रा. द स्पोर्ट कैन आइदर बी जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव. स्टूडेंट जैसे अभी आप देख सकते हैं वीडियो में, कॉम्पिटिटिव रहता है, ओलंपिक्स तक में जो है रेसलिंग को खेला जाता है, और स्पोर्टिव एंटरटेनमेंट, और यू कैन सी WWF टाइप, तो या फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए भी जो है वो इस गेम को खेला जाता है. रेसलिंग कम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स लाइक फोक स्टाइल, फ्री स्टाइल. दीज आर द different styles of wrestling. Okay, so shall we move to next question? Now our next question, it is a heavy sport in which the participants attempt to lift heavy weights that are mounted on steel bars. Friends, ये एक heavy sport है जहाँ पर बहुत weight lift किया जाता है. जैसे आप देख सकते हैं, there is a steel bar in the picture. You can see a player is holding a steel bar, and on the ends of this steel bar the weights are there. Weights को वहाँ fix किया जाता है. So as you can see the steel bars weight, so the name of the game is weight lifting. It is a sport in which the athlete attempts a maximum weight single lift of a बारबेल लोडेड विद वेट प्लेट्स. स्टूडेंट्स, बारबेल पर या फिर आप जिसको स्टील बार्स कहते हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं वेट की जो प्लेट्स हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है, एंड देन जो प्लेयर है उनको एक सिंगल अटेम्प्ट में उसको उठाना होता है. एज यू कैन सी इन द वीडियो ऑल्सो, द प्लेयर्स दे आर जस्ट lifting this weight. That is why you can say the name of the game very easy, weight lifting. And you know students, Karnam Malleshwari, as you can see in the pic, Karnam Malleshwari, she was born on June 1975. She is a retired Indian weightlifter, and as you know that she is the first Indian woman to win a medal in bronze medal उन्होंने जीता था at Sydney Olympics in 2000. Sydney Olympics 2000 में फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया था इन ओलंपिक्स गेम्स. ओके, so shall we move to next question? Yes. Floor, balance beams, vault and uneven bars are different equipments used in this sport. Friends, we have to identify the name. अगर आप देखेंगे इस स्पोर्ट में फ्लोर, बैलेंस बीम्स, वॉल्ट एंड अनइवन बार्स, these are the different equipments which are used in this sport, and the name is gymnastics. You can see in the video also students, जहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं. जिम्नास्टिक्स में आप देख सकते हैं ये जो रॉड दिए हैं, जो अनइवन बार्स होते हैं, इनके ऊपर जिम्नास्ट करते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गेम विच इज इन ओलंपिक्स. एंड इफ यू सी, it is a sport that includes physical exercises requiring balance, जिसमें बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेंथ, बहुत पावर चाहिए, मजबूती चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी की, एंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो. अपने सभी बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन आर्टिस्ट जिम्नास्ट, इंडियन जिम्नास्ट, देन दीपा कर्माकर. Deepa Karmakar, she won a bronze medal at the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, and she became the first Indian female gymnast to do so in the history of the games. So students, I hope ki in the picture you can see Deepa Karmakar clearly, and the video you are very much clear that what is gymnastics. Okay, our next question is, this is a team sport played outdoors on horseback where the objective is to score goals against an opposing team. Students, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, एंड फुटबॉल में जो होता है वन टीम it tries to score the goals against the opposing team. Difference is that the players, they sit on the horseback. आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, द प्लेयर्स दे आर सिटिंग ऑन द हॉर्स बैक. ओके, एंड दे आर हिटिंग द बॉल विद द स्टिक्स इन द हैंड्स.
So answer is polo. As you can see in the video also, student, video में भी आप देखें, the players, they are playing and they have a ball which is hit by the sticks in their hands, and it is a horseback mounted team sport. And friends, अगर आप पोलो की बात करेंगे, it is the world's oldest known team sports. मतलब ये टीम स्पोर्ट रहता है, ओके, टीम्स ही प्ले करती हैं, इंडिविजुअल गेम नहीं है. And the game is played by two opposing teams with the objective of scoring goals, and they have a stick जिसके अभी हम बता रहे थे, that is a long handled wooden mallet, and it is used to hit a small hard ball through the opposing team's goal, ताकि opposite team के गोल में जा सके, उससे वो hit करते हैं. Okay, so the name of this game is polo, P-O-L-O, and it is also known as the king of the sports. This game is also known as king of the sports. Now we have our next question. Foil, épée and sabre. These are the three weapons which are used in this Olympic sport. Students, ये भी एक Olympic sport है जिसमें जो 3 टाइप के weapons use होते हैं, foil, épée and sabre. And you can see that it is a group of 3 related combat sports. जो 3 disciplines जैसे मैंने अभी बताया, foil, épée and sabre, these are used. And if the प्लेयर, जो प्लेयर है, अगर वो दूसरे ओपोनेंट के इन वेपन्स के कांटेक्ट में आ जाता है, कांटेक्ट में ले आता है दूसरे प्लेयर को, तो उसके पॉइंट्स जो है वो काउंट होने शुरू हो जाते हैं. ओके, एंड एज इन द वीडियो ऑल्सो यू कैन सी द 2 players, they have this, they are wearing helmets. The body is covered, fully covered, and the upper part of the body, it is fully covered, and they have the like तलवार की तरह, स्वॉर्ड्स की तरह उनके हाथ में है. द फ्लेक्सिबल होती है ये बहुत ज्यादा, ओके. और अगर उनके वेपन्स जो हैं अपोनेंट प्लेयर को टच कर जाते हैं तो उनके पॉइंट्स जो हैं वो काउंट होने शुरू हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गेम फेंसिंग. व्हाट इज द नेम ऑफ द गेम? फेंसिंग, F-E-N-C-I-N-G. Okay, now we have our next game. The last question. The Tour de France is one of the most well-known tournaments of this sport. Friends, जो टूर डी फ्रांस है ये बहुत ही renowned tournament है इस sport का. And the name by picture you are very clear. What is the name? Cycling. Cycling is the name of this game. The Tour de France is an annual men's multiple stage bicycle race primarily held in France. Friends, ये जो टूर डी फ्रांस है ये एक एनुअल जो है बाइसाइकिल रेस है जो जनरली फ्रांस में होती है. ओके, एंड ऑल्सो ओकेजनली, कभी कभी ये जो है एनुअली तो वो फ्रांस में होती ही है, कभी कभी नियर बाय कंट्रीज में भी इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. ओके, तो यू कैन सी जो रेस है ये अप्रॉक्सीमेटली 22 to 23 डेज चलती है. अभी आप अगर देखें तो 2021 का जो टूर डी फ्रांस है, इट विल टेक प्लेस फ्रॉम June 26 to July 18. तो अप्रॉक्सीमेटली 22 डेज. ओके, इन द वीडियो यू कैन सी द cyclists that they are trying to win the race. Everyone tries to win the race. Okay, cycling race hai, and this year it will be the 108th edition of Tour de France. Okay, so I hope this chapter is clear, students. You enjoyed the videos also, the short videos, and I'm just recapitulating the answers one by one. Number 1 answer is diving. Number 2, squash. Number 3, wrestling. Number 4, weightlifting. Number 5, gymnastics. Number 6, polo. Number 7, fencing. And number 8 is cycling. Yes. Now students, we move to lesson 6. This is lesson 6 of unit 2, sports roundup, and the name of the lesson is Great Sports Person of Today. Students, in this chapter you will learn about many great sports persons and the name of the sport
they play. Okay, the answers they are given in the help box. You have to choose the correct name of the player and also the sport which they play. Okay, so let's move to number 1. Yes, in this picture you can see the player. The name of the player is LeBron James. LeBron James, and sport is basketball. So LeBron James, students, he is an American professional basketball player and he plays for Los Angeles Lakers of the National Basketball Association. स्टूडेंट्स, जो लीब्रॉन जेम्स है ये अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं एंड वाइडली स्टूडेंट्स ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन प्लेयर इन द हिस्ट्री. स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्लेयर माना जाता है इनको. जेम्स is frequently compared to Michael Jordan. Michael Jordan, student, he is former professional basketball player है वो and one of the best players of the world. तो जेम्स को उनके साथ frequently compare किया जाता है. Okay, so what is the name? LeBron James, and sports is basketball. Okay, now we move to next. Yes, name is Rory McIlroy. Okay, and the sport is golf. Golf, students, it's a very royal game. Rory McIlroy is a professional golfer from Northern Ireland. कहाँ से हैं वो? Northern Ireland से हैं. And who is a member of both the European and PGA tours. He is a former world number 1. स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर रह चुके हैं वर्ल्ड गोल्फ में एंड ही हैज स्पेंट 100 वीक्स तक वो इस पोजीशन में अपने करियर पर रह चुके हैं एंड इट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट. सो प्लीज आइडेंटिफाई द पिक्चर. स्टूडेंट्स, पिक्चर को भी ध्यान से देखेंगे एंड द नेम इज रोरी मैकइलरॉय एंड द स्पोर्ट इज गोल्फ. What is the name of the game? Golf. Now we have our next question. Yes. Name, you can see the picture. First of all, see the picture. Their name is Carolina Marin and sport is badminton. Carolina Maria Marin Martin. ये इनका full name है and she is from Spain. So she is a Spanish professional badminton player. She is reigning Olympic champion. Students, Olympic champion रही हैं वो, 3-time world champion रही हैं, 5-time European champion रही हैं and the former world's number 1 in badminton world rankings. Student, badminton में वो world number 1 rank लेकर रही हैं for the women's single discipline, holding the world नंबर 1 टाइटल उन्होंने कितने वीक्स तक रखा है? 66 वीक्स तक. स्टूडेंट्स, अगर अभी आप लास्ट मूव पिक्चर में देखेंगे तो उन्होंने 100 वीक्स तक अपनी इस पोजीशन को रखा था. और अगर हम कैरोलिना की बात करें तो कैरोलिना मैरिन ने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग 66 वीक्स तक होल्ड की है एंड स्टूडेंट्स, इट इज नॉट एन इजी टास्क. ओके, बहुत मेहनत से ये जो प्लेयर्स हैं इन पोजीशंस को होल्ड कर पाते हैं जिन पर उनकी कंट्री, वर्ल्ड, इनके पेरेंट्स, सब हर कोई प्राउड फील करता है. नेक्स्ट वी मूव टू नेम इज लुइस हैमिल्टन. लुइस हैमिल्टन नेम है इन प्लेयर का. ओके, एंड द स्पोर्ट इज फॉर्मूला 1. दिस इज पिक्चर नंबर 4. पिक्चर नंबर 4 इन योर बुक. फॉर्मूला 1 स्पोर्ट. स्टूडेंट्स, आप सबको तो मालूम होगा फॉर्मूला 1 रेस के बारे में. सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, ये इनका कंप्लीट नेम है स्टूडेंट्स. ही वाज बोर्न ऑन 7 जनवरी 1985 and he is a British racing driver. He currently competes in Formula 1 for Mercedes
बहुत ही एक्सपेंसिव कारों में से है स्टूडेंट्स, मर्सिडीज। हैविंग प्रीवियसली ड्राइवन फॉर मैक्लेरन फ्रॉम 2007 to 2012। मैक्लेरन के लिए भी इन्होंने जो है कार्स रेसिंग की है फ्रॉम 2007 to 2012। एंड इन Formula 1 हैमिल्टन हैज वन अ जॉइंट रिकॉर्ड 7। उन्होंने जो हैमिल्टन है इन्होंने एक जॉइंट रिकॉर्ड बनाया है विद इन द 7th वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल्स। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर? लुइस हैमिल्टन। एंड द नेम ऑफ द स्पोर्ट इज Formula 1। फ्रेंड, दिस इज 4th picture in your book of lesson number 6 given on page 6. Yes, now we move to next personality, Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, and you can see in the picture also the chess pieces with which chess is played on the chessboard. So the name of the game is chess. What is the name of sport? Chess. Magnus Carlsen is the Norwegian chess grandmaster, sorry। जो मैग्नस कार्लसन है वो नॉर्वेगियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं, जो अभी स्टूडेंट्स आजकल के टाइम में करंटली ही इज द वर्ल्ड चेस चैंपियन, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियन। नॉर्वेगियन मीन्स स्टूडेंट्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। Carlsen first reached the top of the FIDE world rankings in 2010। So in 2010 में सबसे पहले वो टॉप पर पहुंचे थे FIDE world rankings में। Okay, so the name of the player is Magnus Carlsen and name of the sport is chess. This is given in picture number 5. Now we move to the last sports personality and his name is Mohammad Farah। Okay, and the sport is athletics। athletics में friends ये हैं मोहम्मद फारा and his full name is Sir Mohammad Mukhtar Jama Farah। He is a British long distance runner। long distance की races करते हैं स्टूडेंट्स ये, and the most successful British track athlete in modern Olympic Games history। long distances में he is the 2012 and 2016 Olympic gold medalist in both the 5,000 meter and 10,000 meter races। Friends, 2012 और 2016 में ये Olympic gold medalist रहे हैं and see the length of the track is 5,000 meter and 10,000 meter। Friends, so he is the most successful British track athlete। सबसे successful British track athlete रहे हैं and name is Sir Mohammad Mukhtar Jama Farah and if you see it is Mohammad Farah। Game is athletics। So students, by this we complete the 2 chapters, that is chapter number 5, chapter number 6। I just wish you thanks। So I hope that you will enjoy this chapter and you will write the answers of this lesson in your book and you just share the answers with me as soon as you complete these chapters। Students, up to this chapter you will have the chapters in your revision test 1। इस चैप्टर तक आपका जो सिलेबस है वो रिवीजन टेस्ट 1 में आएगा। सो यहाँ तक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सभी पिक्चर्स आपने देखी हैं, आपको छोटे छोटे वीडियोस अटैच किए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। ओके।